Hello friends, welcome in R.K.D Pathshala. This is my second video and I am continuing the first chapter of Business Study 12th class, Nature and Significance of Management. Yesterday we have discussed about what is the meaning of management and what is the meaning of management and what are the functions of management. We have discussed in the previous class. Now we are discussing about objectives of management and levels of management. First of all, objectives of management. What is the meaning of objectives? Objectives, whenever we are doing the something, it's we are doing the something before we have to decide in advance ki what is the objective of our behind this. So objectives of the management is getting the profit, and here personal objectives, social objectives, and organizational objectives. Personal objective, it is related to the person's, it is he is doing the work somewhere and he is satisfied with salary and there he is getting the recognition. मतलब क्या है उसमें हम कह सकते हैं कि जहाँ वो काम कर रहा है बंदा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में अच्छी सैलरी मिल रही है, उसको वहाँ पर सम्मान मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, ठीक है, उसकी इज्जत की जा रही है वहाँ पर, उसका बॉस अच्छा है, कलीग सही है, तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि वो वहाँ से सेटिस्फाइड होना चाहिए जहाँ काम कर रहा है. दूसरा है जो ये सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव. Social objective, we can say where we are doing the work we are safe, and here we can say not unfair trade practices, adulteration, मतलब मिलावटी चीज़ ना मिलना, वहाँ पर सेफ होना, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना, ठीक है, जहाँ पर काम कर रहे हैं तो है. तो अदर इज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. इसके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैं सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट. दीज आर द सर्वाइवल growth and profit. We can say here survival, growth and profit, the organizational objectives. फर्स्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब भी सर्वाइव कर सकती है लॉन्ग टाइम तक के लिए जब उसको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होगा तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें री इन्वेस्टमेंट करती है, दोबारा से इन्वेस्ट करती है उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि उसको और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके. देन नाउ इज ग्रोथ. ग्रोथ, व्हेन वी अर्न प्रॉफिट देन वी डेवलप आवर ऑर्गेनाइजेशन and it will be growth in our strength and in our organization. Now profit is playing an important role. Profit, we can say every business depends on profit and every businessman wants to get the profit. Now these are the objectives of management, and now we are discussing the levels of management. Levels, three levels here in management: top level, middle level and lower level. It can be say lower level, operational level. Here top level contain CEO, directors, managers, president, vice president, etc. Now middle level contain general manager, production manager, sales manager, etc. Now here operational is containing the foreman, supervisor, Now top level make the policies, plans for the benefit of the organization. Here they make the policies and plans, decides how they can get the profit. And middle level, it gives the it gives the plans and instructions to the middle level. Middle level follows these and give to the hand over to the lower level in foreman and supervisor. Supervisor and foreman completed the work whatever is given by the top and superiors and middle levels also. Now this is the levels of the management, three important levels. We can say top level, if someone is doing the work for policy making, formulation, which level he is doing the work, we can say top level. And middle level, we can say if someone is doing the work for sales, etc., we can say middle level. And foreman and supervisor, we can say it keeping or overseeing the work on the subordinates and employees, and they completed the work here. Then we can say effectiveness and efficient. Effectiveness means task on time and efficient means no wastage of resources. Task effectiveness means if someone is going, अगर आपको क्या है एक
एक जो है कंप्यूटर बनाने के 100 कंप्यूटर बनाने का ऑर्डर मिलता है, ठीक है। अगर आप उसको उसी टाइम पे उस ऑर्डर को पूरा कर देते हैं, 1 महीने के अंदर 100 या 15 दिन के अंदर 100 कंप्यूटर्स बनाने, तो अगर आप टाइम के अंदर पूरा करते हो इसका मतलब आप इफेक्टिव हो और ऐसी एफिशिएंट है। एफिशिएंट मीन्स क्या, अगर समवन आपको ऑर्डर दे रहा बनाने के लिए, आपने नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज किया है उसमें, ठीक है, तो ये क्या है, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट है, आप एफिशिएंट अपने काम में, ताकि जो इसमें गलती नहीं की आपने और टास्क जो है बिना वेस्ट किए हुए आपने बना दिया है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। दिस इज माय सेकंड वीडियो एंड गुड बाय, सी यू।